Welcome to Sahitya Academy's Webline Literature Series. Today, program is Poet Suite under Ek Bharat, Shresth Bharat. In this Poet Suite, Sri Ganesh Thakur Ansada, Sri Ajay Sundar E.S., Mrs. Joba Murmu, and Sri Kanaganadan sir will recite their poems in Santali and Tamil respectively. On behalf of Sahitya Academy, I welcome to all the poets who are all accepted our invitation and participated here. In first, Sri Ganesh Thakur Ansada sir will going to recite his poems. Sri Ganesh Thakur Ansada is a poet, short story writer, translator in Santali, and he is former member of Sahitya Academy Santali Advisory Board. He was associated with many Santali literary organizations. He has more than 8 books to his credit. He has been honored with the several awards such as Sahitya Academy's Translation Prize, R.R. Kisku Rapaj Award, and Sahitya Shikhar Samman, etc. Now I request Sri Ganesh Thakur Ansada sir, kindly recite your poems. Okay, thank you, Raju sir. Thank you, sir. Thank you, Sahitya Academy, to giving me this opportunity to recite my own poem in Santali. First, I recite my Santali poems names Inya Meddate in Santali. Bhijav idi kana duar ganade kuli thuri inya meddate. Jokhoniñ bagiyak kana sup dalap kumba wara tati silpin sin duar ar gurik furche racha. Bijau idi kana duar ganade kulhi dhuri inya meddak te jokhoniñ bagiyak kana busup dalap kumba wara tati silpin sin duar ar gurik furche racha. Akal serma akal te disam ruwa serma ruwate ujad serma ujerte. Bijau idi kana othasa dahar dhuri inya meddak te jokhoniñ bagiyak kana atu disom tidahi arusika akhara. Bijau idi kana othasa dahar dhuri inya meddak te jokhoniñ bagiyak kana atu disom tidahi arusika akhara. Kargar sengel dhungiya te dem ade cheplo dak te anat nawa teyarok kan marang sohor bajar te. Bijau idi kana ancar logori ti jaga talkha inya meddak te jokhoniñ bagiyak kana atu disom bir buru ar ligiin charna gadada. This my in Santali. Then I said in English translation, it's the tears. The threshold my home and the dust of my street floor, getting soaked with my tears, suffering a lot because of drought, endemic, and displacement. When I lived deserted, my hatched cottage, with its door of matting closed, and my courtyard smeared with cow dung, getting soaked gradually, the earth, the soil, and the dust of road by use with my tears. When I lived deserted, my native land, my posture, and my dancing floor of village street, getting soaked gradually. The rear edge of my saris, the hand, the legs, and the palms, with my tears. When I lived deserted, my native land, my forest and hills, and the dancing flower, and the flowing water of my river and streams. My tears go on rolling. Emotion from industry leads my tears to intense. The overflowing water of newly constructed dam, nor could it to stop my tears to shed. Although it worst of my tears
only once, and the commons of long expansion of city and town, nor could it stop my tears. This is the my tears. Again, next, women Santali. ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱦᱩᱲ ᱜᱩᱵᱟᱹᱝ ᱢᱮᱥᱮ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱜᱩᱦᱩᱲ ᱜᱩᱵᱟᱹᱝ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮ ᱩᱥᱩᱞ ᱪᱚᱴᱟᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱚᱸᱜᱷᱟᱨᱮ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠᱚᱛᱮ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱟᱠᱮᱨ ᱢᱮ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱜᱩᱦᱩᱲ ᱜᱩᱵᱟᱹᱝ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮ usul jodat puru songhare tamak renak sibil akhtarte mohon na jibon takar. Ganesh Thakur, sir. Okay, sir. No, your voice very low. Can you recite without headphones, sir? It's better, I think. Only headphone. No, without headphone, you can recite, sir. Okay, sir. Oh. Inten tamak gitu mena alang talare sibil sagai topol lagi alang talare duk suk hapeting lagi ar lakchar arijali bancaw lagi tamak gitu mena alang talare lakchar nemachar jahate in sosono uhir bichir santiri asandes alang talare boyar sagai darai chala langkan inten tamak gitu mena atu tolarna sarasatin onorom re nyuru nyuru dibri batite arsal busuk dalab orak te asyet akan akhra talar jokon takeroa tamak rena sibil arang huding marang jiwan jiwi loh ko ajanga ru tarte ru ar raha kota manmi jion re dular ar jimido rena sandes pasna tamak gitu mena inten jahate ru lekhan jimit dare foro senggel julua santi na sandes pasna lakchar alicir na nyinir lingina tamak gitu mena inten janam kon guju habi rengej tetang topol bapag milwa milon langarare suk dugre osam herjiwi ketestin tamak gitu mena inten jahati inya obhab jion sanam lekan duk muhim metatinya ujar namal rengej tetang lekan jalai heri join inten tamak gitu mena. Next, it's a Hindi translation. बजाओ ना नगाड़ा मेरी तरह तू भी बजाओ ना मेरी तरह तू भी बजाओ ना अखाड़ा में नगाड़ा घने जंगलों में नदियों में ऊंचे ऊंचे पर्वतों में नगाड़े के मधुर आवाज से दिलों को स्पंदन कर देना मेरे पास मेरे पास नगाड़े ही तो है एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए और संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए नगाड़ा ही तो है नगाड़ा ही तो है हमारे पास संस्कृति परंपरा जो हमें सभ्य विचार शांति का संदेश आपसी भाईचारा शक्ति प्रदान करता है नगाड़ा ही तो है नगाड़े ही तो है हमारे पास गांव के शांत वातावरण में डिबरी सी जगमगाती पुअल के घरों से घिरी गांव के अखाड़ा में जब नगाड़े की मधुर आवाज गूंजती है बड़े बूढ़े नवयुवन थिरकती पांव ताल पे ताल सुर और संगीत सारे जनमानस में प्यार और एकता के संगीत बिखरती है नगाड़ा ही तो है हमारे पास नगाड़ा ही तो है हमारे पास जिसे बजाकर एकता की मशाल जलती है शांति की संदेश फैलती है संस्कृति और परंपरा की धारा प्रवाह होती है नगाड़ा ही तो है हमारे पास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्षुधा पिपासा विरह वेदना प्रेम मिलन श्रम परिहार सुख दुख में अपूर्व जीवन संबल करती है नगाड़ा ही तो है हमारे पास जिससे हमारी सारी अभोग्रस्त जिंदगी मिटा देती है
विस्थापन पलायन गरीबी जैसी पीड़ा भुला देती है। विस्थापन पलायन गरीबी जैसी पीड़ा भुला देती है। मेरी तरह तू भी बजाओ ना नगाड़ा। एंड नेक्स्ट one more in Santali. पांजा चिकना नापाय कमी साब में जहां ते लहा मा सावता चेहरा कमी उरल में जहां ते सेना मा गावता नवा धुड़ी धरती रेना हर डहारते आयमा गुणमान हड़ को जीवी खाटाव अकादा को आंगा आयु खेमाव अकादा को रेंगेज तेतांग लोलो सितुंग रियाड़ रवांग तबे एनांग नित आमा सावता मेना लिली बिछी नवा रुपल सोना रुपल लेका पीड़ित पीड़ित चांदो तारास लेका मार्शल पांजाय में आम हो उनका जेमोन आमा पांजा हो हड़ को ताला रे जेलो मा आमा हो चिकना पांजा रिया जेमोन आगाम दिन हाबी तहन मा आमा पांजा। एंड संताली हिंदी अनुवाद हिंदी ट्रांसलेशन। तुम्हारे पद चिन्ह। आओ एक अच्छा कर्ज शुरू करें। एक सुंदर सा कर्ज आप पहल करें जिसे बड़ा हो संगठन और मजबूत हो समाज। आओ मिलकर शुरू करें एक छोटी सी कर्ज। इस धरती पर मिट्टी की खुशबू है। इस धरती पर मिट्टी की खुशबू है। धूल भरी राहों में अनेकों वीरों का संघर्ष भरा जीवन। इस धरती पर मिट्टी की खुशबू है। धूल भरी राहों में अनेकों वीरों का संघर्ष भरा जीवन। सुबह शाम तपाया है। भूख प्यास भुलाया है। धूप छांव सर्दियों गर्मियों में जीवन उनका समर्पित था। तब जाकर तुम्हारा समाज है सुंदर और संगठित। सोने चांदी की तरह चमकीला। सोने चांदी की तरह चमकीला। सूरज की तरह रोशन। सोने चांदी की तरह चमकीला। सूरज की तरह रोशन। पद चिन्ह बनाते हुए चलो तुम भी। पद चिन्ह बनाते हुए चलो तुम भी। जिससे तुम्हारे पद चिन्ह भी मनुष्यों की भीड़ में दिख जाएं। जिससे तुम्हारे पद चिन्ह भी मनुष्य की भीड़ में दिख जाएं। जिससे अनंत कल तक अमिट छाप रहे। जिससे अनंत कल तक अमिट छाप रहे तुम्हारे पद चिन्ह। तुम्हारे पद चिन्ह। आओ मिलकर एक सुंदर सा कार्य शुरू करें। एक सुंदर सा कार्य शुरू करें। नमस्कार जोहार। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you for your wonderful recitation. Okay. Now, I request Sri Ajay Sundar sir, kindly recite your poems. Sri Ajay Sundar is a poet, translator in Tamil. His poems have been published in many Tamil literary magazines. Now I request you, Ajay Sundar sir, kindly recite your poems. Thank you, sir. Before reciting my poems, am I audible, sir? Yes, sir. Thank you. Before reciting my poems, I would like to thank Sahitya Academy, especially Thiru Aravindan, convener of Tamil Council, for giving this opportunity. And I would also like to thank my friend, Mr. Thiru Bhagavati, who helped me in translating these poems in English. Now I am reciting my poems. விதிக்கப்பட்ட படுக்கைக்கு துணையாக தொடரும் விசாரிப்புகள், கூட்டிடும் வழிகள், கலைந்த தூக்கம் போலவே வந்து வந்து செல்லும் நலம் விரும்பிகள் சூழ, நீண்ட நோய்மை காலத்திற்கு பின்னான கவிதை போல சற்றே வித்தியாசமானதாய் தோன்றும் உலகம். சலித்து போன நார்ச்சுவர்களுக்குள் நகர மறுக்கும் நத்தை பொழுதுகளினூடே வெளியுலகின் ஒரு துண்டை கவ்வி வந்து காலடியில் போடுகிறது நாய்க்குட்டி. Now I am reciting the translation of this poem. Agony intensified by enquiries accompanying a preordinate repose. Surrounded well-wishers fleeting, a disrupted slumber. Slightly appears the world different.
like a poem after a prolonged ailment. Lethargy confined four walls between the snaily time that refuses to move. A puppy snatches and drops at my feet a piece of the outer world. Second poem. இறந்த பூச்சியின் உடலை இழுத்து வரும் எறும்பென நினைவுகளை தூக்கி வந்து முன்னால் போடுகிறது மனம். குளத்தில் எரிய சில்லு பொறுக்கும் சிறுவர் போல் சிலவற்றை பொறுக்கி எடுக்கையில் பட்டாம்பூச்சியாய் மாறி பறக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது இறந்த காலம். The translation: like an ant hauling a lifeless body of an insect, the mind throws the memories affront, while picking a few in the manner of kids picking flat stones for stone skipping, transformed a butterfly and started flying my bygone days. Third one. உச்சிக்கிளை விருப்பங்கள் ஊஞ்சலாடும் இவ்விரவில் பிரகாசிக்கின்றன மரங்கள். மிகவும் பிடித்த பாடலை யாரேனும் தவறாக பாடியபோது எட்டி பார்த்த கோபங்கள் இன்று இருப்பிழந்து விட்டன. இமைமூடலுக்கு காத்திருக்கும் துளி நீரைப் போல வெளியேற காத்திருக்கும் பொழுதுகளின் பீச்சம் தெரியாமல் மூக்கடைத்து நிற்கிறது நெஞ்சம். மொழிவானில் நீளும் காத்தாடியின் வாளாய் படபடக்கிறது கவிதை. உலர் நில வெடுப்புகளில் விழும் மழைத்துளியாய் இசைக்கிறது ஆக்காட்டியின் ஒளி. கட்டை விரல் நகவிடக்கு அழுக்காய் ஒட்டி கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் சில சந்தேகங்கள். The translation: This night the trees shine when the desires of the top branch swings. The anger that peeked out when someone sang my favorite song wrong have lost its existence. Having got blockage in the nose, the heart standing without able to recognize the smell of the seasons which are waiting to outburst, like a teardrop waiting for the close of the eyelid. The poem, fluttering as a kite's tail, emerges in the languid sky. Raindrops falling on the cracks of dry land, so musically the lappings call. Like the dirt between thumb's nail, still sticking awesome doubts. The fourth one. பெய்து கொண்டிருக்கும் பெருமழை நிற்கும் நேரம் நெருங்கியிருப்பது புத்திக்கு உரைக்கிறது. ஆயத்தங்கள் எதுவுமில்லாத ஒரு பொழுதில் சட்டென நிற்கிறது மழை. வெயில் புதிதல்ல. மழைக்கு பிறகான வெயிலை எதிர்கொள்வதில்தான் தற்போதைய பசுமையின் துக்கமெல்லாம். The translation: The mind pursues the end of heavy rain at hand. It suddenly stops. Completely unprepared, sunlight is not anew. The melancholy of verdant hues now is how to face the sun immediately after the rain. The fifth one. மனிதர்கள் அனைவரும் இறந்து வெற்றிகரமாக தங்கள் போர்களை முடித்து கொண்ட பின்னர் ஒரு முள்ளம்பன்றியின் முதுகை போல தோட்டாக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது நிலம். தனது எஜமானனின் மூக்கை நினைவுறுத்தும் ஒரு தோட்டாவை கவ்வி சென்று அவனது சடலத்திற்கருகில் புதைக்கிறது ஒரு நாய்க்குட்டி. இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த கடவுள், எங்கும் அமைதி நிலவும் இக்காலத்தில் இனி மனிதர்களுக்கு என்ன வேலை என நினைத்து அவர்களை படைப்பதை நிறுத்திக் கொள்கிறார். பின் யோசிக்கிறார், மாளிகையில் வீட்டிற்கும் மனிதர்கள் நீரூற்றாமல் எப்படி அந்த தோட்டா செங்கனிகளை தரும் அழகான மரமாக உருப்பெறும் என. The translation: The light, like the back of a porcupine decorated with bullets, the land. The war successfully won, with all humans dead. A young dog snatches a bullet akin to its owner's nose
Near his corpse it buries. Witnessing these occurrences, pondered God, the human existence. In the peace prevailing world realm, he stopped creating them. Then he contemplates, without being watered by humans atop the citadel, how grows the bullet, a beautiful tree, bearing crimson red fruits. The last one. விழுந்த பற்களை எச்சிலை தொட்டு ஒட்ட வைப்பது போன்றதுதான் உடைந்த நினைவுகளை பொறுக்கிச் சேர்த்தலும். புதிதாய் பிறந்த குட்டிகளுக்கு தாய்நாய் வழங்கும் கதகதப்பை உடையவை மனதின் துருவங்கள். அவற்றிற்கிடையிலான வெளி சுழியத்திற்கும் முடிவெளிக்குமான தூரத்தை விட பல மடங்கு பெரியதென்பது ஒரு கொடிய நினைவுக்கு நன்றாகவே தெரியும். இனி செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அந்நினைவிற்கு உங்களை கொஞ்சம் தின்ன கொடுப்பதுதான். The translation: sticking with saliva a broken tooth, much the same as collecting and assembling broken memories. The poles of mind possess the warmth given by the mother dog to its offsprings. The space between those poles manifold further than the distance between zero and infinity. Knows well the vicious memory. Left to do is to feed yourself to it. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful recitation. Now, Mrs. Joba Mamu madam is going to recite her poems. Mrs. Joba Murmu is a poet, short story writer, and translator in Santali. She was associated with many Santali literary organizations. She has more than 6 books to her credit. She has been honored with several awards such as Sahitya Academy's Bala Sahitya Puraskar, R.R. Kisku Rapaj Award, Pandit Raghunath Murmu Award, Rabindranath Tagore Award, and Sahitya Sikhar Samman, etc. Now, I request you, Mrs. Joba Murmu ma'am, kindly recite your poems. Ma'am, unmute your audio, ma'am. Your audio is mute. थैंक यू सर। Thank you. मैं साहित्य अकेडमी को मौका देने के लिए थैंक्स करना चाहूंगी। सनम को जोहार। आज साहित्य अकेडमी की ओर से आयोजित वेबलाइन लिटरेचर सीरीज पर्स मीट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में उपस्थित सर टीसी चंद्रशेखर राजू, कविगण एवं श्रोतागण सबों को मेरी ओर से जोहार। सानाम ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ आंजोमिया को इन पास्टा से खन सगुन जोहार। पहला कविता है मेरा इन संथाली में। इन दो अनोढ़े दो बाय बेना सनኝ कना जतो साहटा रेना ओना कोण जहां रे लेखा ओल तहेना आर बांग जहां रे साताम ओल तहेना आर बांग जहाया ᱧᱩᱛᱩᱢ खोदा तहेना ओना कोरे गे खोदा दोह सनኝ कना। मिटंग साहटा रे समटाव सनኝ कना बांग को पढ़ाव रे हो आर पढ़ाव कते को दोह रुआड़ गोद रे हो जतो साहटा रे ओल तहेन मा नोंका जेमन जतो होड़ पढ़ाव सना को मा रा रोदन रस्क नोंका ᱧᱟᱢ कना। पतोब रेना जतो साहटा गे लक्तियाना गे बुझ मा नुआ को गे ñेल सनኝ कना सानाम दुख हरकत सहाव कते जतोआ हिड़ी सनኝ कना। हेंदे कली रे अड़ते ओना दुखते जहां दो ओका चितर रे फोटेल कते नोनोल रे पोरेत कते तोपल तोनोल सनኝ कना। दाड़ेया खान हुनंगी सानाम होड़ लगे लेतार पढ़ा सनኝ कना। जेगेत जकात रे दुख हरकत आर बांग धरती रे एटकेटुणे हेंदे कली रे अड़ते खोदा सनኝ कना। मन मी जीवन रे रस्के सरसामा आर सुख चंपल मा। अनुवाद मैं कविता नहीं बनना चाहती हूँ सभी पृष्ठों की उस कोना जहाँ पर अंक लिखा रहता और नहीं तो जहाँ पर विषय लिखा रहता और नहीं जिस पर जिसका नाम अंकित रहता है वहीं पर मैं अंकित होना चाहती हूँ। एक ही पृष्ठ में मैं रहना चाहती हूँ, कोई भी ना पढ़े और पढ़कर भी रख क्यों ना दे। सभी पृष्ठों में लिखा जाए ऐसा जैसे सभी लोगों को पढ़ने की इच्छा हो। रोना गाना खुशियां ऐसा मुझे मिले। पुस्तक की सभी पृष्ठ जरूरत ही लगे
ऐसा मैं देखना चाहती हूँ। सभी सुख दुख सहकर सब कुछ मैं भूलना चाहती हूँ। काली स्याही के शब्दों से उस दुख को, जिसे कौन से चित्र में उभर कर कलम में भरकर बांधना चाहती हूँ। हो सके तो मैं सभी लोगों के लिए हमेशा पढ़ना चाहती हूँ। विश्व में स्थित दुख के सागर और धरती के विपदाओं को काली स्याही के शब्दों से अंकित करना चाहती हूँ। मानव जीवन में खुशियां बरसे और सुख की बौछार हो, मैं यही चाहती हूँ। दूसरी कविता मेरी अरदास। आलम गोंगी आयो नोआ बेड़ा रे, उमेर 3 नितो लिचड़ गया, इन दो कनई अमित कुंडे मेरो। ओलो पढ़ाव कतिं कमी जोंगा, धरती गोटा आमा nyutumin दोहया, nyam कनईयो आमा दुलड़ अंचार, आलम गोंगी आयो नोआ बेड़ा रे। रस्क दो इन्या कुची उमेर रिया, ओरेत मेना गया इन्या जीवी हड़मो रे, आलम तोलिं आयो तोनोल सिकड़ीते, बाचेम उयहरत कना गिद्रा उमेर तीन, दुख बेड़ा रे हापेम उयहरिंग गया, आलम गोंगी आयो नोआ बेड़ा रे। लय में नितो मने ओकोय अकोटाय, ओका ओका कुरें पांते बड़ाय, आमगे कनामियो इन्ही सरथी, आमगेम उद्गव तिन्या इन्या हुदिस मन, आमा जंगा फेडरे होता है ओचोइन में, आलम गोंगी आयो नोआ बेड़ा रे। हिंदी अनुवाद। अरदास। मुझे इस वक्त ब्याह मत करना माँ, उम्र अभी मेरी नादान है, मैं हूँ तेरी प्यारी बेटी, पढ़ लिख कर मैं काम करूंगी, धरती में आपका नाम रोशन करूंगी। मुझे चाहिए माँ आपका प्यार का आंचल, मुझे इस वक्त ब्याह मत करना माँ। खुशियां मेरी बचपन का नस नस में मेरे मन हृदय में, मत बांधो माँ ब्याह के बंधन में, क्या याद नहीं मेरी बचपन की, दुख की वक्त शायद मैं याद आऊंगी, मुझे इस वक्त ब्याह मत करना माँ। बताओ माँ अभी मेरा मन शांत कौन करेगा, कहाँ कहाँ मैं शांति ढूंढूं, आप ही हैं मेरे सारथी, आप ही करेंगे मेरे मन को शांत, आपके पैरों में रहने के लिए जगह दो माँ, मुझे इस वक्त ब्याह मत करना माँ। तीसरी कविता है सेंगेल। अंगरा रेया मुलिन टुटुरीते एसेत काते सेंगेल नित दो थिर थार दुड़ुब मेनाया, अंतर मने रेगे आज आज ते रगिया को कनाय, चाहे आज साव को खिलडू एनेज कना। आर हम मिद धाव हिस्सा सुयो रेना हिरका सेरेंग आंगोज काते, हानते नाते एनेज आते सेंगेल आज आज तेगे बय बय ते सालगा कनाय, मने मने ते सेंगेल मा आजा धोरम तीस हम बाय बगिया, मेनखान धोरम बेपारिया को उनी अड़ी इदी काते उखा उखारे बाको एनेज ओचो केदिया बोढ़े काते। लेताड़ लेताड़ गे नोंका एड़े ओचो एनते सेंगेल आजा तीरे सेपेंग काते हेंदे अंगरा, दुखत मनेते आज आज तेगे रुहित जोंग कनाय, नवा आस रेया दिस हुदिस सामांग काते उनी दो गोटा पड़ा को एनेज अचुर केदिया, तेहें बपरू सेंगेल दो तोरो चुपुच साथ करे ताड़ा में मुनिया कदा। हिंदी अनुवाद। आग। अंगार के मलिन घूंघट ओढ़े आग अभी चुपचाप बैठा है, अंतर मन में अपने आप ही गुस्सा हो रहा है, जो लोग उसके साथ खेल खेलते हैं, और एक बार ईर्ष्या की गीत गाते हुए इधर उधर नृत्य करता आग अपने आप ही धीरे धीरे सुलगने लगा है मन ही मन। आग तो अपना धर्म कभी नहीं भूलता, लेकिन धर्म के व्यापारी उसे बहकाने के लिए कहीं कहीं उसे नाच नचाते हैं। बार बार ऐसा धोखा खाने पर आग अपने हाथ में काली अंगार लिए दुखित मन से अपने आप झुंझला रहा है। नई आशा के साथ अपना उपदेश लिए उसे सभी जगह नचाया गया, आज बेचारा आग हाथ में विभूति लिए चलने को आतुर है। अंत में एक कविता इन्या सना। बन्याम कना सेता सिंगड़ इन को नेहरइन मा, नीना केतिन सनांग मेना मन मोहतिन न्याम मा, बन्याम कना बाड़े दारे लेका झोड़ू मुलिन पासनावा, नीना केतिन सनांग मेना धुबी तासात लेकइन अटेत को मा, बन्याम कना उन दाड़े होड़ को अरसोंग मा, नीना केतिन सनांग मेना आयो जांगा फेटरे सारा लेताड़िन ताहे को मा, बन्याम कना दाड़े नि पोट सनाम को रुमिन मा, नीना केतिन सनांग मेना दाड़े बनु आलो को मितइन मा, बन्याम कना लाफांग रिन तहन मा सनाम खुना मड़ांग, निना गितिन सनांग मेना जोस ठाव रिन सेटेरो मा, बन्याम कना मन मोहत हमाल ते आलुन उता मा, निना गितिन सनांग मेना अड़ांग इन सजाव दाड़िया मा, बन्याम कना धोरम करम nyutum tin तहन मा,
ninag gitin sanang mena lekti berare kamirin lagak ma. Banyam kana doria likain marangoa osar pasnaw kate mulut ilanday ma. Ninag gitin sanang mena jibit charna likain lingin ma. Banyam kana sin chando leka oang sermarin chalka ma. Ninag gitin sanang mena diora benaw kate nyuto tin sahay ma. Banyam kana hok aidari saheb babuñ benak ma. Ninag gitin sanang mena dhorom horin tahe kok ma. Banyam kana hor ko leka dharti re nyutuming kama ma. Ninag gitin sanang mena noa hasarini hoponin hui kok ma. Banyam kana unak hamal likon inya persisin chando likain chalka ma. Ninag gitin sanang mena ko parting jahatisuk gesagunok ma. Banyam kana dugi dinu bidu chandan leka nyutum kutapas na ma. Ninag gitin sanang mena man midhorom inyanggoch ma. Banyam kana sorogin nyam ma jion khandaw mucot kate. Ninag gitin sanang mena manwa regin jonom ruorok ma. Banyam kana inyak ho nyutum nonol nagam sahta re tahen ma. Ninag gitin sanang mena jayjuk nonol chalawa katahen ma. अनुवाद मेरी इच्छा। मैं नहीं चाहती सुबह शाम मुझे पूजा अर्चना करे, बस इतनी ही इच्छा है मेरी मान सम्मान मुझे मिले। मैं नहीं चाहती बरगद की पेड़ की तरह मैं छाया फैलाऊं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी धूप की घास की तरह मैं बिछ जाऊं। मैं नहीं चाहती अत्यंत ऊर्जा जिससे लोग ऊर्जावान हो जाए, बस इतनी ही इच्छा है मेरी माँ के पैरों के नीचे मैं सदा रह पाऊं। मैं नहीं चाहती सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं सबके आगे, बस इतनी ही इच्छा है मेरी मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं नहीं चाहती मान सम्मान बोझ तले में न दब जाऊं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी शब्दों की माला में पिरो सकूं। मैं नहीं चाहती धर्म कर्मों में मेरा भी नाम रहे, बस इतनी ही इच्छा है मेरी आवश्यकता अनुसार मैं काम में लग सकूं। मैं नहीं चाहती समुद्र की तरह मैं फैलूं और फैलकर मुस्कुराऊं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी जीवित झरना की तरह मैं बहती रहूं। मैं नहीं चाहती सूरज की तरह आसमान में चमकूं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी दिया बनकर मैं अंधकार मिटाऊं। मैं नहीं चाहती अधिकार की मैं साहब बाबू बन जाऊं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी धर्म के रास्ते पर सजा चलती रहूं। मैं नहीं चाहती लोगों की तरह इस धरती पर नाम कमाऊं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी इस मिट्टी की मैं बेटी कहलाऊं। मैं नहीं चाहती उतनी भारी किस्मत पर सिसिन चंदों के समान मैं टिमटिमाऊं, बस इतनी ही इच्छा है मेरी किस्मत कभी ना कभी उज्जवल हो। मैं नहीं चाहती दिगुदुनी विदु चंदान के जैसा मेरा नाम फैले, बस इतनी ही इच्छा है मेरी मानव धर्म को मैं संजो कर रख सकूं। मैं नहीं चाहती स्वर्ग मुझे मिले मृत्यु के पश्चात, बस इतनी ही इच्छा है मेरी मानव में ही मैं दोबारा जन्म लूं। मैं नहीं चाहती मेरा भी नाम कागज कहानियों के पन्नों पर रहे, बस इतनी ही इच्छा है मेरी हमेशा चिरकाल तक मेरी कलम चलती रहे। सनम को जोहार। थैंक यू। धन्यवाद मैम। Now I request Sri Kanaganadan sir. Sri Kanaganadan is a poet and essayist in Tamil. He has more than 2 books to his credit. His poems and essays have been published in Tamil literary magazines. He is an editor of Vechi, a quarterly Tamil journal. Now I request Sri Kanaganadan sir, kindly recite your poems. Sir, audible sir? Yes sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning one and all. I would like to thank Sagitya Academy and my translation team Kamalakannan, Baranidharan, Vetrichelvi, Manimoli. First, I would like to short introduction or short note. ஒரு எளிய உண்மையை போல ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன். தொன்மையான இசைக்கருவியை இரவில் இசைக்க விட்டு தனிமையில் கேளுங்கள். இசைப்பது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய இசை அல்ல, அது பேரவலத்தின் ஓலம் என்பதை உணர்வீர்கள். ஒரு மூதாயின் பெருமிதச் சுவை நிறைந்த அரவணைப்பிலிருந்து விலகி எதையும் காசாக்கும் பொருளாக்கக்கூடிய கூட்டத்தின் வெவ்வேறு உடல்களாக அலைவதை உணர்வீர்கள். முடிந்தால் அந்த இசைக்கு தகுந்த ஆடுங்கள். காடு உங்களுக்குள் பிடிபடும். அதை எழுதுங்கள், அதை பேசுங்கள், வாய்விட்டு அழுங்கள். என தொலைத்து நாமும் உயிர்களும் நிலமற்று போய் திரியும் இந்த வாழ்க்கைக்குள் காணத்தி ஒரு மீட்பின் பொருட்டாக வரக்கூடிய குறியீடு இருந்தும் நுகர்வு என்னும் புள்ளியில் நாம் எல்லோரும் இறுதியில் மொழிக்குள்ளாக எஞ்சி நிற்பதாக மாறி போகிறது இந்த வாழ்க்கை. In English, I would like to speak a simple truth
just like a truth. Listen to old music instrument and at night when you are alone. Here, what you listen is not music, only an expression of pains and pangs. Mudai, an abode of boundless love. We will be realized that we are different bodies who are interesting making money, and that we are far away from her. Dance to the tune of that music if you can. You will catch the point forward wood. You speak them and write them. You cry over that. We have lost wood and hill. We and a, we and other beings are without land. Kanati is a symbol of redemption for us from such a rich life. We got entangled in the cube of web of material fetishism. Finally, we live in language, and everything is language for us. First poem, நிலமிலி. காடன் பெருந்துணை. குறுங்கதையாடல்களின் திரட்சி, பாடல்களின் நொதிகலன், இசையை ஆறவிடாது நீட்டும் ஏறு நிழல், நீர் பெருக்கெடுத்து பேயாடிச் சொல்லிருக்கும் ஆலை, நாளங்களில் துடியாடும் ஆதி விதை, அது வேறு. துடைத்து ஒழித்து பச்சை உடலும் அனலும் நாளில் கைப்பிசைந்து குரலருந்து நீள்வரிசை கட்டி நிற்கும் தவிட்டுக் குருவிகளுக்கு இடையில் ஒரு சிதிலங்களால் ஒரு நான். English translation. Destitute. Woods are my companion. Compilation of the dialogues. Genesis of the poems. Crescendo that keeps a music alive. Exotic waterfall. Melting factory of words. Primeval germ that dances in the winds. They not. On the day of scorching heat burning out, green amid the hue of sand, yellow berries in the debris. I am the one that bits end. Next one. ஒரு நெடுங்கால வேள்வி. சுரம் தின்று கொளுத்திருக்கும் முதல் மாதுளம் பிஞ்சுகள், பெருந்தனிமையோடு மண்டிய புதரில் வெப்பாலை நிழலில் மயில் மறந்து போன முட்டை, ஒரு போச்சல் அடித்தும் ஆணை நெருஞ்சி பூத்த செம்புழுதி, மீந்திருக்கும் காத்திருப்பின் வாடையெறியும் புள்ளினங்களை காணுதலில் மலை தரும்பும் சிற்றுயிரினான். வரவினாலே சாத்தியமாவென புனைவுக்குள் மொழி தாவுகிறது. பெயர் தெரியா பறவை வெகுநேரமாய் எனையே பார்க்கிறது. மலர்ச்சி நிறைந்த நிலமெங்கும் சாதி முடை. வன்மங்களால் கட்டி எழுப்பிய ஊரெனும் சாபம் சிறகுகளை குறிவைக்கிறது. மலை முகர்ந்து கனவாய் புகும் காற்றில் நிலவு கவிழ்ந்ததில் இரவு தொலைகிறது. பற்றுக்கோடாய் பயணங்கள் மட்டும். English translation. Unfulfilled wish. The first wheeled pomegranate grown eating the summer heat. A forgotten egg laid by a pavo in a bloomy lone bush under a வெப்பாலை tree. ஆனை நெருஞ்சி floored tempest out of a hill. Witnessing the birds which now the remains of Angie. I am the small building. It is because of my arrival longs the language which hopes consisting of the mood. An anonymous bird staring me for a long, prosperous land privily with the stingy castious smell. A crash in the name of village built upon vehemence aims the wings. Gypsy smelling the mountains enters the pass with the moon tittle upon the sky, fades the night. Only the travel remains as a grip. Next. வண்டல் பிளந்து
கொடுவாய் காட்டும் பல நேற்றுகளை கரைத்து வேனில் உருக்கும் மழை சொற்களை கலைத்து போடுகிறது. காலத்தின் பிறழ்களிலிருந்து பாய்வதற்காய் மறைந்திருந்த நீர்மத்தின் கூறுகளும் வேறு வேர்களும் புணர்ந்து தான்களுமாக தணிந்து பச்சை பேசி வெங்காய்ந்த வெற்றாற்றின் பாடலை தட்டி எழுப்புகிறது. தடுப்பில் புரள்கிற பெருந்துளிகள் மீன்களின் நேரும் எதிருமான நிரலில் மொழியை கரையில் விட்டுவிட்டு பதுமம் ஒன்றை கைகூட்டிச் செல்லும். பதரும் குலையின் மொழிபிணைந்த நரம்பையெல்லாம் அறுத்துவிட்டு நீண்ட பொருளை சுருங்கக் காட்டும் கடலடையும் போது. நுண்மணலை தள்ளிவிடும் பெருந்தனிப்போடு உள்ளோடியும் பறந்து செல்லும் கால பிறலின் அழகு. English translation. Dissolving many yesteryears, the rich olive oil soil, with its wide open mouth, comes the rain, dissolving the silence, ready to ebb out from the deviations of time, the hidden constituents and the other fuses mitigating viridity, awaking the slumber of barren வெட்டாறு, brimming over the banks, leaving aside the language, among the school of fish diving, picking up the hands and takes away the imagery, will reaching the sea, cutting off empathetic nerves, replete with language, shrinking the above mentioned, all entering with eager pushing out the glossy sand. It is beauty of time deviation. Fourth one is, சிறகுகள் முளைத்து கொண்டதாய் ஊரல்லர் எழுகிற பொழுது திரும்பி பார்த்து கொள்கிறேன். அருவமாய் என்னுள்ளிருந்து பெருகி வெளியும் சொல்லொன்று உடல் கிழித்து வெளியேறுகிறது. பண்ணொன்றை பற்றத்தான் காணத்தியிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவளும் சுனைவற்றிய வருத்தத்தின் நிமித்தமாய் கலங்கனி நிறைந்த புதரின் நிழலில் ஒண்டியுள்ளாள். அவளிடம் காட்டின் நீர்மடிப்பு வெயில் காய்ந்து மேனி பூசும் சிரிப்பிலிருந்து கருந்தோளேறும் சற்றே காதலாய் மனம் பரவும். English translation. When slandering gets its wing, I look into myself, stretching, ripping upon my body leaves a formless word. I am asking the Kanati to layer up a pan. She was in bed, hiding in a shadow of bush, repleting Kalangani tree, the tragedy of the porch torrent, wrapped upon her body smells, crawls the black body slilets, spares the fragrance of love. Fifth one is, நிலம் என் உடல், திரிபுகளின் இயக்கம், ஒரு சாவு மீளல், பச்சை பூத்து சருகாகும் சொல், முடிச்சுக்கட்டுகளை உடைத்த மலர் இயல்பு, எலும்பில் பெருகி வெளியும் அடர்ந்த மொழி, நீங்கள் சொல்லும் பித்து அல்ல அது, இதுவல்ல அது, அதுவல்ல அது, பெருமுடை கிழித்து தணியும் மலை அது, வேனில் முயங்கி தீராதளிக்கும் ஒரு கற்றாழை பூவாசம், நினைவில் நிற்கும் படிமம் அதுவாகி இருந்து அழுதலும் புணர்தலும் நீங்களும் பெருங்காதலாக இருத்தலும், உணர்வாய் தேங்கி எஞ்சி மண்டை வெளியும் பதுமம், கட்டடங்கா நீர்வடியும் நிறை சொல், அது முடிவிழி. English translation. Tetraform is my body, constant flux, a death, a green prospered dry word, a stalk that breaks the binding knot, enriched poem that flows through the marrow. It is not the maddest what you say. It is not that. That is not that. The rain that mitigates the great sting. Ceaseless fragrance of aloe vera, coupleting with summer. An everlasting sediment, bemoaning
bonding and being a great love. It is a ideal overflow with stagnant field, concluding word that seeds the perpetual tears. Thank you. Nandri. Thank you, sir. Thank you for your wonderful recitation. Now, I request Sri Ganesh Thakur sir, kindly share your views. Kindly unmute your audio, sir. बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य केवड़े को। और एक भारत श्रेष्ठ भाषा के तहत बहुभाषी संथाली तमिल कवियों का समागम, संथाली तमिल कविता का एक दूसरे का संपर्क, ये बहुत अच्छा लगा। और आने वाले दिनों में मैं साहित्य एकेडमी से अनुरोध भी करूंगा कि इस तरह की वेबलाइन सीरीज बहुभाषी विभिन्न प्रांतों के कवियों के साथ विभिन्न समुदाय विविध प्रांतों के कविता को एक दूसरे के साझा करने का एक अच्छा मंच है साहित्य एकेडमी। और हम सब साहित्य एकेडमी के मंच के द्वारा ही अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से साझा करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में साहित्य एकेडमी एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हुए आ रहा है। और हम सब सुदूर जंगलों से आते हैं, सुदूर देहातों से आते हैं, सुदूर गांव से आते हैं। उस जगह के कवियों को, उस जगह की कविता को देश के सामने रखने का अच्छा प्रयास रहा है। साहित्य अकेडमी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इस तरह की विभिन्न भाषियों के संपर्क सूत्र के द्वारा हम सबको बंधे हुई हैं और अपनी प्यार मोहब्बत, यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम कल्पना करते हैं। एक भाषा साहित्य के द्वारा हम एक दूसरे से कोने कोने से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। साहित्य अकेडमी को कोटि कोटि प्रणाम मेरे से। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। Now I request Ajay Sundar sir, kindly share your views, sir. I really congratulate Sangit Academy for conducting these type of webinars, like taking peoples from various languages together, so that we can so that we can know about the trends of poetry and literature in other languages too. So I congratulate for that. And speaking of these poems, the Ganesh's poems, first poem, it was about the tears and about the internal feelings of the human mind. So what I like to say is, apart from these cultural and language is different, some moods of humans are everywhere the same. So it was a wonderful poem. And then the other poems and the Tirumati Joba Mumu's ma'am's poems, I can't able to share my thoughts. I could have tried if those translations were in English. As it were in Hindi, I couldn't share my thoughts. I'm sorry for that. And speaking of Tirukanaganathan's poems, as I have already read his poems, it carries the flavor of nature and the smell of nature embodied in it. Like many of the terms in those poems we can't translate in English. You
could have know this if you listen those translation like the terms anainerinji or vettaro, these type of things. It's a flavor of that soil where he is coming from. So it couldn't translate. We couldn't translate it in English. As usual, his poems are carries that flavor, and it is very nice. And that's all. Finally, I am thanking everyone for this opportunity, and I congratulate all those poems and poets who recited here. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mrs. Joba Momo ma'am, kindly share your views, ma'am. थैंक यू सर। मैं सबसे पहले साहित्य अकेडमी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस कविता पाठ में मौका देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आज विभिन्न भाषाओं की कविताओं का साझा करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। और इस प्रकार के मंच को मैं नमन करना चाहूंगी, क्योंकि इसी के बदौलत हमें एक दूसरे की कविताओं को सुनने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। और ऐसे ही साहित्य अकेडमी से अनुरोध है कि हमें हर भाषाओं के साथ, अलग अलग भाषाओं के साथ मिलने जुलने का या मंच साझा करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे तो ऑनलाइन तो हो ही रहा है, ऑफलाइन में भी हम लोग को मौका देना चाहिए या मौका मिलना चाहिए। तभी हम लोग एक दूसरे के संपर्क में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकेंगे, हमारी कविताओं का साझा कर सकेंगे, हमारी संस्कृतियों का साझा कर सकेंगे। और मैं अधिक नहीं कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। Now I request C. Kanaganadan sir, kindly share your views, sir. Thank you, sir. வணக்கம். நான் தமிழ்லயே பேசிடுறேன். ஆங்கிலம் அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஓகே, தமிழ்ல பேசுங்க. பொதுவா நமக்கு சாகித்ய அகாடமி இது போல பல மொழி கவிஞர்களை இணைக்கிறது, குறிப்பா இந்தியாங்கிறது ஒரு பன்மைத்துவமான பகுதியாக வந்து இருக்கிறது. அப்போ இந்திய கவிதை மரபும் ஒரு தொன்மையான ஒரு நீண்ட நெடிய மரபா வந்து இருக்கு. அதுல குறிப்பா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியானது வந்து சந்தாலி கவிதைகளோட தமிழ் கவிதைகளை நம்ம இணைச்சு வச்சு படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா வந்து பட்டது. அதுக்கு காரணம் வந்து அதாவது ஒரு முதன்மையான ஒரு பெரும்பான்மையான மொழிகளுக்கு இடையில இயங்கக்கூடிய சில மொழிகளோட நம்ம இணைஞ்சு பயணிக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய தனித்துவமான கூறுகளை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். குறிப்பா ஜோபா முர்மு மேடம் அவர்களுடைய கவிதைகளை நான் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியலனாலும் கூட அதனுடைய இசை ஒரு ஒழுங்க வந்து நம்ம அதுக்குள்ள கவனிக்க முடியும். ஒரு கவிதையே வந்து ஒரு இசைத்தன்மையோட இருக்கிறதா வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது. குறிப்பா அது வந்து ஒரு பழங்குடியினுடைய பழங்குடி தன்மையினுடைய தொடர்ச்சியா இருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியுது. அதே போல முன்னாடி பேசின கவிதை வாசிச்ச சாருடைய கவிதைகள்லையும் நிலம் பற்றியும் அதன் பின்னணியில இருந்து மனித உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் ஒரு தொடர்ச்சி 2000 ஆண்டு தொடர்ச்சியினுடைய ஒரு ஒப்புமை பகுதியா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வகையில சந்தாலி அவர்களுடைய நான் அந்த சில காணொலிகளையும் கூட கேட்டிருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன். அதுல வந்து அவர்களுடைய நடனங்களும் அதனுடைய உணவு முறைகளும் அதே போல கவிதை மரபும் வந்து ஒரு இந்திய ஒரு தொன்மையான கூறுகளை கொண்டதா வந்து இருக்கு. அது நம்ம நீண்ட ஒரு விவாதத்துக்கு உட்பட்டதுதான். நம்ம எல்லா மொழிகளோட இணைச்சு வச்சு பேச வேண்டியதா வந்து படுது. ரெண்டாவது அஜய் சுந்தர் அவருடைய கவிதையை நானும் முன்னமே படிச்சிருக்கிறேன். அவருடைய கவிதை துணி என்ன அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு நான் தெரிஞ்சிருக்கு. அதுல வந்து குறிப்பா ஒரு உருவகத்தன்மை தான். பெரும்பாலும் நம்ம தமிழ்ல தட்டையான கவிதைகளை எழுதுறதை தாண்டி ஒரு உருவகத்தன்மையுடைய கவிதைகளை, அதுவும் குறிப்பா ஒரு அழகியல் சார்ந்து கூடவே அன்றாட நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை அது உருவகப்படுத்துறது, அவர் சொன்ன அந்த மன்னன் பற்றிய ஒரு உருவகம், இதெல்லாமே வந்து நம்ம அது வந்து கட்டாயமா ஒரு நல்ல ஒரு படிமமா வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அந்த வகையில அஜய் சுந்தருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். அதே போல சாகித்ய அகாடமி
நிகழ்வு வந்து உண்மையிலேயே நாங்களே யாருன்னே தெரியாது. நாங்களா உண்மையிலேயே களம் வந்து முகநூல் தான் எழுதுறதுக்கான களமா வந்து இருக்கோம். அந்த வகையில எங்க கவிதைகளையும் படித்து இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கக்கூடிய, இதுக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனா உண்மையிலேயே இந்த வாய்ப்பை அளித்த அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு வந்து என்னுடைய நன்றியை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். கூடவே இந்த கவிதைகளை எழுதுறதுக்கான ஒரு அடித்தளமா இருக்கக்கூடிய நான் என்னோட கவிதைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த காணத்தி அப்படிங்கிறது அது வந்து நான் ஒரு யாரோ ஒருத்தர் அல்லது நான் விரும்பக்கூடியவர் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஏதோ இன்னைக்கு நம்ம ஏதோ விட்டு போன நான் முன்னதுமே சொன்னது போல மொழிக்குள்ளாகவே நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சு வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம ஒரு கடந்த காலத்தினுடைய ஒரு வளமை, இயற்கை எல்லாமே வந்து அழிக்கப்பட்ட ஒரு நிலத்துல இருந்து நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம். கட்டாயமா நம்ம அதை வந்து பேசவில்லை அப்படின்னா நம்ம வெறும் நுகர்வு உடல்களாக மட்டுமே நான் வந்து போயிடுவோம். அந்த வகையில அந்த மாதிரியான ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய உள்ளங்களுக்கும் என்னோடு பயணிக்கக்கூடிய அந்த கவிதை உயிர்களுக்கும் வந்து நான் என்றைக்கும் நான் வந்து நன்றி உடையவனா வந்து இருப்பேன். அந்த வகையில் அந்த வாய்ப்பை நல்கிய சாகித்ய அகாடமிக்கும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி. நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். So I thanks to all the poets who are all accepted Sahitya Academy invitation and participated here and recited wonderful poems. Once again, I thank you all, and all viewers, I thank you who are all watched Sahitya Academy, these programs through Sahitya Academy media channel. All viewers all over the world continuously watch Sahitya Academy literary programs in 24 languages. Thank you.